वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में गाइज़। और मैं हूं जेपी। गाइज़ आज आए CBR 150। तो गाइज़ इसमें काफ़ी फॉल्ट है। भैया काफ़ी दूर से लेकर आए हैं, भैया से ही बात करेंगे। जो एक्चुअल फॉल्ट है इसमें है वाइब्रेशन। भाई ने सेकेंड हैंड परचेज़ की थी बाइक। सेकेंड हैंड परचेज़ करने के बाद भी बीच में एक बार मेरे पास सर्विस भी करके आके लाए थे। बाकी टाइम के अकॉर्डिंग उस दिन हम इसको ज़्यादा जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं की है, तो भैया अभी मेरे पास फ़ोन करके आए हैं। जो इसकी प्रॉब्लम है वो सारी सॉर्ट आउट करवानी कर रहे हैं। तो भैया से ये बात कराता हूँ, ये कहाँ से आए हैं, अरे ये जो इसमें प्रॉब्लम है वो क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है गाइस। बाकी मैंने टेस्ट ड्राइव ली, एक तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इशू आ रही है। जो फ्यूल टैंक पर जो सीट है उस पर भी वाइब्रेशन आ रही है। जो अपने फुट मैट होती है उसमें वहाँ से ज़्यादा वाइब्रेशन है गाइस। वेलकम भाई मेरे चैनल पर। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा। जब मेरा नाम अक्षय है और मैं नारनौल हरियाणा से आया हूँ। मैं सर का चैनल करीब 1 साल से फॉलो कर रहा था, तो उसी के दौरान मैं यहाँ पे सर्विस सेंटर पे आया था। तो पिछली बार सर्विस करवाई थी मैंने, तो सर्विस तो पूरी हो गई थी, तो टाइम नहीं था। तो सर ने फॉल्ट तो पकड़ लिया था कि भाई इसमें इंजन की सेटिंग आउट है। तो उस टाइम टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने बोला कि सर अगली सर्विस पे दोबारा करवा लेंगे। तो इस बार फिर बीच में मेरा मन भी हो गया था, मैंने एजेंसी में दिखवाई। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहे थे, कि बोल रहे इंजन सही है। कोई क्लच प्लेट डाल रहा था, उन्होंने स्पार्क प्लग भी बदले, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया था। फिर मेरा बीच में बेचने का मन हो गया था। इतने में सर की यूट्यूब पे वो CBR 250 की वीडियो देखी, तो फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ गया कि सर को एक बार फिर दोबारा दिखा लेता हूँ। तो इसलिए मैंने सर को से कल बात की और फिर आज मैं आया सर के पास सर्विस करवाने। सो गाइस भाई ने कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया था, तो मेरी एक 250 की जो CBR 250 की वीडियो लगी, उसके देखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और दोबारा लेकर आया ये जो CBR 150। तो एक्चुअल फॉल्ट मैंने बता दिया इसमें। ये तो सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वाइब्रेशन का है। दूसरा इसका फ्यूल पंप का थोड़ा इशू लग रहा है मेरे को। भैया को कोई इशू नहीं लग रहा, बाकी खोल के चेक करेंगे जो प्रेशर है फ्यूल पंप का वो कितना है। अगर एक्चुअल प्रेशर इसका है तो हम कोई दिक्कत है ही नहीं। वो वीडियो में भी दिखाऊंगा हमने क्या क्या फॉल्ट किया गाइज, ठीक है। तो गाड़ी को हम रख लेते हैं, भैया छोड़ के जा रहे हैं। और हम क्या क्या काम करेंगे वो वीडियो के बीच में दिखाएंगे। और फॉल्ट इसमें हमारा जो वाइब्रेशन का है, एक्चुअल फॉल्ट जो है वाइब्रेशन का है, और उसमें क्या फॉल्ट था वो पूरा डिटेल देंगे इस वीडियो में गाइज, ठीक है। तो गाड़ी को कर लेते हैं वर्कशॉप में और भैया को भेज देते हैं। तो बीच में मैं जैसे गाड़ी ठीक होगी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है गाइज। सो फ्रेंड्स, अपनी जो CBR 150 है वो रैम्प पे आ गई है। और जो हम इसमें काम करने जा रहे हैं, एक्चुअली सबसे पहले मैंने जो इसके इंजन के फाउंडेशन बोल्ट है और जो ना जो स्विंग आर्म है उसका बोल्ट है वो चेक किया, वो फुल टाइट था। पर इसमें जो वाइब्रेशन है कुछ हद से ज़्यादा है। सीट पे, हैंडल पर, जो हैंडल बार पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। कस्टमर हद से ज़्यादा परेशान है। और इसमें हमने भी चेक किया, हेड और सिलेंडर के बीच में भी हल्की 3 बॉन्ड लगी हुई है, मतलब इसका इंजन पहले ओपन हो रखा है। तो इसमें हमें जो लगता है, हमें जो वोल्ट लग रहा है गाइस, जो अंदर इसमें क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक बैलेंसर होता है, उसकी जो टाइमिंग होती है वो आउट है। और तो गाइस खुलने के बाद ही पता चलती है, ठीक है। तो कस्टमर ने हमें जो है परमिशन दे दी है, तो हम इसको इंजन को ओपन करवा रहे हैं। रिबूट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब खोलना स्टार्ट कर दिया गाइस। इसका जो एक्चुअली जो इंजन है यहाँ से, ये जो 3 बॉन्ड लगी हुई है, तो इसका इंजन पहले ही ओपन है। तो खोलते हैं फटाफट।
So guys, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show